Okay, we can start. So this today topic is icosanoids. So basically, it is made up of made from these fatty acids. It is derived from the fatty acids, and which is having a most of the function which played in our body system. Okay, so basically, what is icosanoid? So icosanoids basically are a signaling molecules. Okay, so they provide a signals in our body, which is made by oxygenation of 20 carbon fatty acids. Okay, basically these icosanoids, when it is synthesized in the body, in our body, so how it is prepared? It is prepared by oxygenation of 20 carbon fatty acids. That means those fatty acids having a 20 number of carbon atoms in their structure, in their chain length. So that fatty acids are responsible to synthesize the icosanoids. Okay, so these icosanoids exerts complex control over many bodily system. So they are having a most of the function in our body system. What are the function? One example is inflammation or immunity, and also this thrombosis is also there. Okay, and as a messenger in the central nervous system. सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा से फॉर एग्जांपल मैसेज पास होते हैं, सपोज हमारा बॉडी है, हमें हीट का मतलब सेंसेशन होता है, कोल्ड का सेंसेशन होता है, से फॉर एग्जांपल निडल है, निडल अगर हमारे बॉडी में कोई चुभा रहा है तो वी आर फीलिंग सम काइंड ऑफ पेन. So that pain signal is passing to this our central nervous system, that is brain. So passing the signal from the point of origin to the destination is playing a role by these icosanoids. Okay, so basically these icosanoids are signaling molecules. Then the network of control that depends upon icosanoids are among the most complex in the human body. Okay, it's a very complex in nature. Then these icosanoids derive from either omega-3 or omega-6 essential fatty acids. Either omega-3 fatty acids or omega-6 fatty acids, we can derive icosanoids. So basically, these icosanoids are synthesized from these fatty acids, which are omega-3 or omega-6. Omega-3 और omega-6 क्या है? Polyunsaturated fatty acid का type. But how you are identifying these fatty acids are omega-3 or these fatty acids are omega-6? Sir, position of double bond from acidic group. Carboxyl. Anyone? और कोई है जो omega-3 और omega-6 का डिफरेंस बता सकते हैं? How we can identify this omega-3 or omega-6? Sir, if the first double bond is at the third position from the COOH group, then it is omega-3, and if it at the sixth position, then it is omega-6. Okay, Gautam is incorrect. Polyunsaturated fatty acid is sir. Omega-3 is starting from carbon. Sir, from methyl group. And 6 starting from 6th position. कोई मिथाइल एंड बोल रहे हैं, जो मिथाइल एंड बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और जो कार्बोक्सिलिक एंड बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं. So you must have a concept which one is omega-3 and which one is omega-6. How we can identify the first double bond present on third number of carbon atom from the methylene, then it is a N3 or omega-3. If the first double bond present in the fatty acid carbon chain length at sixth number of carbon atom from the methylene, then it is a
omega 6 और N6 series of fatty acids. That is, इतना ही तो है, इसमें क्या कंफ्यूजन होना चाहिए. जो डेल्टा सीरीज की क्लासिफिकेशन है, डेल्टा सीरीज वाले में हम कार्बोक्सिलिक एन से कार्बन नंबर को काउंट करते हैं. फर्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ है, दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ है. बट ओमेगा 3 ओमेगा 6 में केवल फर्स्ट डबल बॉन्ड जो आ रहा है उसी को हम काउंट कर रहे हैं. लेकिन डेल्टा सीरीज वाला जो है, डेल्टा सीरीज में जितना भी डबल बॉन्ड होगा, हर डबल बॉन्ड को हमें जिस कार्बन एटम पे प्रेजेंट रहेगा उसको हमें डेजिग्नेट करना होता है. से फॉर एग्जांपल डेल्टा 9 के बाद डेल्टा 5, सॉरी डेल्टा 12, then there will be delta 15 if there is a 3 double bond. So delta 9, delta 9, 12 and 15. So like that you have to write. So that designation is there. Okay, उस पे हम फोकस ना करें, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. So this omega 6 icosanoids are generally pro-inflammatory in nature, whereas omega 3 icosanoids are less inflammatory in nature. So this omega 3 derived icosanoids and omega 6 derived icosanoids are function, both having a function, opposite function. एक प्रो इंफ्लेमेटरी है तो दूसरा लेस इंफ्लेमेटरी है. एक प्रो थ्रोम्बोटिक in नेचर है तो दूसरा जो है हमारा लेस थ्रोम्बोटिक in नेचर है. ठीक है. थ्रोम्बोसिस हमारा एक फंक्शन है ब्लड का, जो क्लोटिंग के समय में हमारा थ्रोम्बोसिस होता है ना प्लेटलेट्स का, तो दैट फंक्शन इज देयर. सो बिकॉज ऑफ दिस थ्रोम्बोसिस मींस रिएक्शन, जो हमारा है ब्लड हमारा क्लॉट होता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस आइकोसानोइड्स, इफ इट इज थ्रोम्बोक्सिन अगर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, और वो किस फैटी एसिड से प्रोड्यूस हो रहा है, ओमेगा 3 या ओमेगा 6. अगर ओमेगा 3 से है तो एंटी इंफ्लेमेटरी वी कैन से और एंटी थ्रोम्बोसिस वी कैन से, whereas ओमेगा 6 से बना है तो प्रो इंफ्लेमेटरी एंड प्रो थ्रोम्बोटिक इन नेचर. The amount and balance of this fat in a person diet will affect the body icosanoid controlled function. ठीक है. एग्जांपल क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो है बॉडी के अंदर में, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस. थोड़ा सा भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का हमारा खान-पीन में अगर इम्बैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा, इफ देयर इज नो बैलेंस, देन जो पर्सन इस तरह की बीमारियों से सफर कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है. कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, उन लोगों के लिए बहुत सीवियर हो जाता है. तो नाउ दिस आइकोसानोइड्स इज आर 4 फैमिली. क्या क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स. There are 4 families of icosanoids: prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes, leukotrienes. ठीक है. And for each there are 2 or 3 separate series derived either from omega 3 or omega 6 essential fatty acids. तो इनका हमारा अलग अलग सीरीज वो अभी आएगा एग्जांपल में, तो हम पढ़ेंगे. And this series different activity largely explain the health effect of omega 3 and omega 6 fats. Okay, so basically we are having this 4 family of icosanoids. These icosanoids are made by the oxygenation of 20 carbon atom fatty acids, either omega 3 or omega 6. ठीक है. The EPA derived prostanoids have 3 double bond. जो हमारा आइकोसानोइड्स बनेगा, EPA is what? आइकोसा पेंटानोइक एसिड. करेक्ट. Yes. कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है? Sir, 20. कितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है? Sir, 5. तो 20:5. Yes, sir, 5. N3 है या N6 है? N3. N3 sir. N3, but that means omega 3. Yes. Yes sir. So this EPA derived prostanoids have 3 double bonds.
जो प्रोस्टानॉइड्स हमारे आ रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देन प्रोस्टासाइक्लिन्स, ल्यूकोट्राइन्स. So the example you can see here, all these EPA derived prostanoids have 3 double bonds: PGG3, PGGH3, PGH3, PGI3, TXA3. All 3 represents the 3 double bonds in this prostanoids or icosanoids, we can say. While the leukotrienes is having a 5 double bonds, that is LTB5. Okay, whereas the arachidonic acid derived prostanoids have 2 double bonds. Say for example, PGG2, PGH2, PGI2, TXA2. Whereas leukotrienes is having a 4 double bonds, LTB4. So this is the differences. If the icosanoids are derived or synthesized from this omega-3 fatty acids, then the icosanoids or prostanoids having a 3 double bonds in prostanoids और leukotrienes जो हैं उसमें 5 डबल बॉन्ड होंगे. Whereas अगर omega-6 से icosanoid का सिंथेसिस होता है, then जो prostanoids होंगे उनमें 2 डबल बॉन्ड होंगे और ल्यूकोट्राइन्स में जो होगा वो होगा 4 डबल बॉन्ड. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. कहां पे 3 डबल बॉन्ड हो रहा है, कहां पे 2 डबल बॉन्ड हो रहा है, कहां पे 5 डबल बॉन्ड हो रहा है, कहां पे 4 डबल बॉन्ड हो रहा है. ये हमें याद रखना है. ठीक है. देन icosanoids made from omega-3 fats often have opposite function to those made from omega-6 fats. That means anti-inflammatory rather than the inflammatory. So जो omega-3 fatty acids से जो हमारा icosanoids बन रहा है, so उसका जो function है और omega-6 fatty acids से जो हमारा icosanoids बन रहा है, दोनों का जो function है opposite function है. एक inflammatory in nature है तो दूसरा anti-inflammatory in nature है. एक pro-inflammatory in nature है तो दूसरा anti-inflammatory in nature है. So ये हमें ध्यान में रखना है. If both omega-3 and omega-6 are present, they will compete to be transferred. Show the ratio of omega-3, omega-6 directly affects the type of icosanoids that are produced. ठीक है. तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, सो उसमें ओमेगा-3 हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ओमेगा-6 कितना कंज्यूम है. देयर शुड बी वन रेशियो, देयर शुड बी रेशियो. ऐसा नहीं है हम पूरा एकदम ओमेगा-6 ही फैट कंज्यूम करें और ओमेगा-3 कुछ खाए ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा बॉडी सिस्टम पे इफेक्ट करेगा. आइकोसानाइड बहुत सारा बनेगा और बनेगा तो फिर हमें इन्फ्लेमेटरी थोड़ा सा मींस पेन, जलन, आर्थराइटिस का पेन जो होता है उस लोगों के लिए दिक्कत हमारे बॉडी में भी वो सफर होंगे. देन कहीं कट फट गए तो हमारा ब्लड का जो है क्लॉटिंग बनना स्टार्ट ही नहीं होगा, वो हमारा ब्लड हमारा ऐसे ही निकलते रहेगा. तो दैट्स व्हाई देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन ओमेगा-3 एंड ओमेगा-6. ठीक है. And this competition was recognized as important when it was found that thromboxane as a factor in the clumping of platelets, which leads to thrombosis. Suppose thromboxane है, thromboxane, because of that thromboxane जो है हमारा thrombosis हो रहा है platelets का, तो clotting जो है बहुत important है blood का. तो अगर थोड़ा सा भी मींस ये इम्बैलेंस डाइट हम खा रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा थ्रोम्बोसिस होगा ही नहीं प्लेटलेट्स का, तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा. तो उस केस में ये हमारे लिए सीवियर है, उस केस में हमारे लिए ये प्रॉब्लम है. तो ये चीज हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है. And this discovery led to greater interest in finding way to control the synthesis of omega-6 icosanoid, and the simplest way would be by consuming more omega-3 and fewer omega-6 fatty acids. So इस चीज को कैसे कंट्रोल करना है? So for that we have to consume more omega-3 and we have to consume less omega-6 fatty acid. If we are consuming more omega-3, so
our bed means ये जो हमारा आइकोसानाइड सिंथेसाइज होके बनेंगे हमारे बॉडी में, तो वो हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी थ्रोम्बोटिक इन नेचर रहेगा और लेस इंफ्लेमेटरी और लेस थ्रोम्बोटिक इन नेचर रहेगा, तो हमारे बॉडी के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ओमेगा 6 बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो हमारे बॉडी के लिए वो दिक्कत है, परेशानी है। क्यों? क्योंकि वो प्रो थ्रोम्बोटिक इन नेचर है, प्रो इंफ्लेमेटरी इन नेचर है, इंफ्लेमेटरी इन नेचर है। So that's why we must have to take more amount of omega-3 compared to this omega 6. ठीक है ना? So this is the pathway how these eicosanoids are synthesized in the body. ठीक है, in our body. So basically अगर सपोज हम क्या बोल रहे हैं, हम generally eicosanoid definition says the oxygenation of 20 carbon atoms के द्वारा हमारा eicosanoid का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। बट हम अपने डाइट में फॉर एग्जांपल हम जो फैट कंज्यूम कर रहे हैं, so that fat is what? It's a triglycerides and fatty acids, sorry, this glycerol and fatty acids. So that fatty acids, say for example this is alpha linolenic acid. Alpha linolenic acid is what? Omega-3 fatty acid. Omega-3. Fatty acid. Linolenic acid? Omega-6 fatty acids. Omega-6 fatty acid. So we are having two series. This left series is the omega-3 series, and right hand is the right series is the omega-6 series. इस omega-3 सीरीज से जो हमारा आइकोसानाइड सिंथेसाइज हो रहा है, so if we are consuming this linolenic acid, alpha linolenic acid, omega-3 fatty acid, then this enzyme is playing a role, delta 6 desaturase. Delta 6 desaturase, the first enzyme. Here also omega-3 पे same enzyme and omega-6 पे भी हमारा same enzyme. Then it is synthesizing stereoidonic acid. So 18:3 से क्या है, डबल बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 18:4 हो रहा है, 18:4. बट सीरीज जो है हमारा omega-3 है, दैट मींस फर्स्ट डबल बॉन्ड जो हमारा मिथाइल एंड से जो हमारा आ रहा है वो 3 नंबर कार्बन एटम पे ही आ रहा है, ठीक है। देन हियर आल्सो यू कैन सी डेल्टा 6 desaturase 18:2, so 18:3 हो रहा है, but series is same, omega-6 is there. Then there is elongase enzyme, delta 6 desaturase, then there is elongase में क्या है हमारा, यहां से देखो 18 से 18 ही है, कार्बन एटम इज सेम, only double bond is increasing. Here also 18:18, you can see 18:18. So 18:18, that means carbon number is same, only the double bond is increasing. But when this enzyme will act, then there will be a number of carbon atom will increase. So this 18:4 से 20:4 पे जा रहा है, ओके, 2 कार्बन एटम का इंक्रीज हो गया। यहाँ here also 18:3 से 20:3, ओके। Then again delta 5 desaturase, यहाँ पे डेल्टा 6 था फर्स्ट में, बट नेक्स्ट desaturase एंजाइम जो है दैट इज डेल्टा 5 desaturase. So here 20:4 से 20:5, carbon atom is same, number of double bond is increasing. Here also 20:3 से 20:4, carbon number is same, only double bond is increasing. So because of this enzyme, delta 5 desaturase enzyme, okay. So 20:5 is what? 20 carbon 5 double bond. No, it is a 20:5, 20 carbon atom and 5 double bond. It is a EPA. Eicosapentaenoic acid. So here also this 20:4. 20:4 is Arachidonic acid. arachidonic acid, omega-6. So from here
The 20 carbon atom if it is made or EPA or arachidonic acid. So from here the icocyanides will synthesize. You can see PGG, PGD3, PGE3, PGF3, PGI3, PGH3, TXA3. All are 3 double bond prostanoids. Whereas leukotriene series, you can see this LTA5, LTA, LTB5, LTCD, LTD 5. All are 5 double bond. This leukotrienes. Whereas arachidonic derived icocyanoids, prostanoids is PGD2, PGE2, PGF2, PGI2, TXA2. All are having a 2 double bonds. Whereas the leukotrienes synthesized or derived from this arachidonic acids having a 4 double bond. LTA4, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4. Okay, so that is the differences. If the prostanoids or leukotrienes are derived or synthesized from EPA, eicosapentaenoic acid, then they will have a 3 double bond in prostanoids and 5 double bonds in the leukotrienes. Whereas the prostanoids which are synthesized or derived from the arachidonic acids, then they are having a 2 double bonds, whereas the leukotrienes is having a 4 double bonds. So this you have to remember. Then again there is a elongase enzyme. So 20 is a 22 is to 5. Then again 20 is to 4, say 22 is to 4. Okay. Then again delta 4 desaturate. Desaturate enzymes, what will happen? The number of double bond will increase. So 22 is to 5, say 22 is to 6. 22 is to 4, say 22 is to 5. And this pathway again go back if it is body required. So it will go and convert this icocyanoids. Okay? So this is the pathway how the icocyanides are synthesized in our body. Okay? So this pathway you have to remember. So ये है dietary omega-3 counters the inflammatory effects of arachidonic acid icocyanoids in 3 ways along the icocyanoids pathway. एक है displacement का, एक है competitive inhibition and दूसरा है contraction means counteraction. So dietary omega-3 decreases tissue concentration of omega-3. So there is a less to form omega-6 icocyanoids. अगर हम omega-3 ज्यादा ये ले रहे हैं तो क्या होगा? जो arachidonic that means omega-6 का concentration जो है अपने आप वो कम होगा, तो कम से कम क्या होगा? omega-6 derived icocyanoids का formation होगा. So there will be displacement of this formation of these icocyanoids. Then competitive inhibition, EPA compete with AA. EPA is eicosapentaenoic acid and AA is the arachidonic acid. For the access to the cyclooxygenase and lipoxygenase enzyme. So the presence of EPA in the tissue lowers the output of AA icocyanoids. So these two enzymes is important. Cyclooxygenase and lipoxygenase. Because of these enzymes, these icocyanoids will form in our body. Then counteraction, some EPA derived icocyanoid counteract their arachidonic derived counterparts. Okay, so that definitely that icocyanoid which is synthesized from EPA, so definitely it will be anti-inflammatory in nature or anti-thrombotic in nature. So arachidonic acid से जो हमारा icocyanoid derived हो रहे हैं, तो if concentration of the icocyanoids which synthesized from EPA is having a more, so it may counteract. This counter reaction will be there. Okay, so this is essential fatty acid family. You can see omega-6. This is omega-6. This is omega-3. So this figure you can see. First figure, omega-6.
कैन यू काउंट कितना है ये, कौन सा फैटी एसिड है? दिस वन, फर्स्ट वन, 6. दिस फर्स्ट वन ओमेगा omega 6 6. फैटी एसिड. जो फर्स्ट है ना ओमेगा 6 का फर्स्ट, ये जो हमारा काउंट ये किया गया है, Yes. ये कौन सा फैटी एसिड है? पहला वाला. हाँ Linoleic. क्या है? Linoleic. बताओ यार. Linolenic. कितना कार्बन एटम है इसमें? 18 का. 18. 18. और डबल बॉन्ड? 2. So 18 is to 2 is what? 18 carbon 2 double bond. Linoleic. Linoleic, sir. So this linoleic fatty acids you will found in the corn oil, then sunflower oil, then safflower oil. So you can see this omega 6. This is first carbon atom. Okay, methylene is there. First carbon atom, second carbon atom, third carbon atom, fourth carbon atom, fifth, and this is the sixth. So on the sixth carbon atom, the first double bond is there. That's why it is the omega 6 family or N6 family. Okay. So from linoleic acid, that means 18:2, what fatty acid is synthesized? So 20:4. 1, 2, 3, 4. 4 double bond is there. Number of carbon atom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So 20:4. First double bond from methylene, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on sixth carbon atom. So this is the 20:4 omega 6, and the fatty acid is the arachidonic acid. If icosanoids are derived from this essential fatty acid, it's a more thrombotic and inflammatory in nature. More thrombotic and inflammatory in nature. This is one. Then omega 3 family. So you can see here, this is what? Linolenic, alpha linolenic. So total number of carbon atom is 18. You can see count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Number of double bond? 1, 2, 3. Number of double bond on which carbon atom? 1, 2, 3. Third number of carbon atom. So total number of carbon atom is 18. 3 number of the double bond, and this fatty acid is the omega 3 or N3, and the fatty acid is the alpha linolenic acid. ये कहाँ मिलेगा हमें? सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, फैक्सीड ऑयल. So from alpha linolenic acids, icosha EPA बन रहा है. Okay, 20:5 icosha pentanoic acid, and then from EPA this docosha hexanoic acid, DHA. This EPA and DHA you can find in the oily fish. The fishes which is having a fatty in nature, fatty fishes हैं. Say for example, this mackerel is there, sardine is there. All are the fatty fishes. Okay. So and the cod का जो liver है ना, उससे हम this we are preparing fish oil capsule. Okay. So if these icosanoids are synthesized or derived from this EPA, then the icosanoids will show it is a less thrombotic in nature and less inflammatory in nature. Okay, so this is all about the icosanoids.
I think this you don't require, Anna. So I'm leaving this. Only that much is required. Okay. So this is all about the icosanoids. अगर कुछ समझ में नहीं आए हो तो you can ask. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, otherwise we can close the session. No question? Any question? No, sir. Okay, then we can close. Yes, sir. Okay.